আই থিঙ্ক আমরা লাইভে চলে এসেছি। সরি। হ্যালো স্টুডেন্ট, গুড আফটারনুন। আই থিঙ্ক we are on live now. My audio video is clear or not? Please confirm me. Hello student, I think we are on live. Audio video is clear or not? Please confirm me first. Okay, so this is our session, numerical analysis. So today I will try to discuss numerical analysis. What is the important part of the numerical analysis? देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत मतलब लार्ज टॉपिक है ना, द वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक से मतलब सजेस्टिव क्वेश्चन देना बहुत मुश्किल होता, तो इसीलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा पार्ट अच्छे से मतलब रेडी करके जाना है एग्जाम के लिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मतलब एक आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम जो सारे स्टूडेंट है हमारा इजी टू लर्निंग का, और जो सारे स्टूडेंट इजी टू लर्निंग का बाहर है, मतलब जो सारे स्टूडेंट ये पूरा सेमेस्टर में इजी टू लर्निंग के साथ थे, वो सारे स्टूडेंट का तो न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छे से आई थिंक क्लियर है। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस जब मैंने पढ़ा है, मतलब ये क्लास लिया न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो अच्छे से सारे एग्जाम्पल देके और सारे थ्योरम सारे एग्जाम्पल सभी कुछ दिखाया। बट आज थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मतलब जितना पॉसिबल हो न्यूमेरिकल एनालिसिस डिस्कस करने के लिए, ठीक है? जितना पॉसिबल हो मैं डिस्कस कर रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है? तो देखो, और हाँ, वन स्मॉल अनाउंसमेंट, हमारा जो बीटेक का सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का मतलब कि अब मतलब ये तो तुम्हारा जो सेमेस्टर है 13 से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट होगा। तो उसके बाद मतलब ये 28 मार्च के अंदर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा बीटेक का जो नया सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उसका ट्यूशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो जो सारे स्टूडेंट अच्छे से मतलब स्टडी मटेरियल और जो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता हूँ मतलब सेमेस्टर के लिए, तो फील मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारा इजी टू लर्निंग के साथ जुड़िए, ठीक है? मतलब फिर ये पूरा सेमेस्टर का फीस बहुत कम है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमारा फीस इजी टू लर्निंग का जो बीटेक का ट्यूशन का फीस है, पूरा सेमेस्टर का फीस, प्लीज नोट दिस, पूरा सेमेस्टर का फीस मतलब ये 6 मंथ के लिए हम 1599 चार्ज कर रहा है, और ये जो फोर्थ सेमेस्टर का फीस 1999। मतलब ये आप शायद एक दिन का मतलब रेस्टोरेंट का पॉकेट मनी हो कंसिडर कर सकता है मतलब। तो फीस प्राइस इज सो नॉमिनल। सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो जो स्टूडेंट मतलब सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना चाहता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन हमारा जो मतलब इजी टू लर्निंग ऐप है, उस ऐप से हमारा इजी टू लर्निंग का बीटेक का ट्यूशन में रजिस्टर कर सकता है, ठीक है? चलो, तो आज का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है मतलब
न्यूमेरिकल एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर जो है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट चैप्टर में क्या था? फर्स्ट चैप्टर इज द अप्रोक्सीमेशन इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, राइट? कंप्यूटेशन, ठीक है। ये वाले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं था है, मतलब इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है फर्स्ट चैप्टर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस एक दो मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट द शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ के ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में जो मतलब एरर एस्टिमेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एरर फाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ओके। तो शायद आपको ये पूछ सकता है, सर फाइंड द परसेंटेज एरर, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर में। फाइंड द परसेंटेज error, find the percentage error in approximating 1/3 to 1.333। हम कैसे सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चन? हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मतलब इधर एक्स टी हम गिवन है, ठीक है। एक्स टी क्या होगा? एक्स टी मतलब 1/3, राइट? तो 1/3 के जगह पे हम 4/3 लिख, 4/3। तो एक्स टी क्या होगा? मतलब एक्स टी का आई थिंक यू ऑल नो अबाउट एक्स टी, राइट? इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट एक्स टी एंड एक्स ए? Is there any confusion about XT and XA? If you feel any difficulty about XT and XA, then feel free to ask me. Okay? XT means true value, right? And XA means approximate value. All right? Okay? तो हम ये का मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर, राइट? दो टर्म है इधर। ये मींस एब्सोल्यूट एरर, राइट? एब्सोल्यूट एरर, there is two terms. First one is EA, that is absolute error, and another term is the ET, sorry, ER, that is relative error. Okay, this is relative error. So all the term is very important for your semester examinations. So please read carefully all the terms. Okay. So what is EA and what is ER? Okay, and EA is what? EA को हम ऐसे लिख सकता है, EA equal to XT minus XA, right? The true value minus approximate value we can represent as a XT minus XA equal to EA. And relative error, we can write relative error ER equal to mod of XT minus XA by XT. Okay, so this is the EA and this is the ER. Okay, absolute error and relative error. So my question is, what is the percentage error in the approximation 4/3 to 1.3333, right? So this is my question. So percentage error. So the percentage error
So the percentage error is what? Xt minus xa by xt into 100. This is my percentage error. Clear to all? So this is my percentage error. So we can write what is the value of xt? 4 by 3 minus xa. What is the value of xa? 1.333 by, this is the 4 by 3, right? Into 100. So after that calculating, we get some values, and this is the answer of the percentage error. Okay. So this type of problem is very important. Find the percentage error. So percentage error finding is important for this chapter. And another important things for this chapter, like determine the absolute error, right? Absolute error finding is another important things for this chapter, right? Finding determine absolute error. This is another important type. Determine absolute error. This is another important type for this chapter. And except this, determine absolute error, and another important question for this chapter, determine relative error. So there is three possibilities for this chapter. First one is finding percentage error, second one is finding absolute error, and third one is finding relative error. So इस चैप्टर पे, so in this chapter three types of questions are important. Okay. And so first chapter is complete. I think in the first chapter is enough. Now we come to the second chapter. Okay. फर्स्ट चैप्टर में और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये इतना ही एनफ है फर्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड चैप्टर क्या है? फाइनाइट डिफरेंस, सेकेंड चैप्टर। ओके, सो वी कम टू द सेकेंड चैप्टर, फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस में क्या क्या है? देखो फाइनाइट डिफरेंस में क्या क्या है आपको, मतलब एक बार अच्छे से देख लो। फाइनाइट डिफरेंस सेकेंड चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो फाइनाइट डिफरेंस में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, फर्स्ट दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के लिए। फॉरवर्ड डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरवर्ड डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है? मतलब डेल्टा से हम डिफाइन करते हैं ना फॉरवर्ड डिफरेंस को। तो फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो लाइक कैपिटल डेल्टा समथिंग डेल्टा वाई आई, राइट? से वाई डेल्टा वाई 0, डेल्टा वाई 1, ऐसे हम लिखते हैं ना। तो दिस इज माय फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट? तो फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई आई इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई फॉर आई इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू n minus 1. This is my forward difference. Okay. So actually delta is called forward difference operator. Okay. Delta is called forward difference operator.
So this is very important. Forward difference is very important for this chapter. So and डेल्टा एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू this all types of expression is very important for your upcoming examinations. F of x plus h minus fx. Like ऐसे हम लिख सकते हैं डेल्टा 2yi इक्वल टू डेल्टा yi प्लस 1 माइनस डेल्टा yi. ओके, तो ऐसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एंड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो सारे प्रॉपर्टीज है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. So another important part is the some properties of capital delta. तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो सारे प्रॉपर्टी है ना, दिस ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो इस प्रॉपर्टी जो सारे प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज में जो सारे प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टीज में जिस प्रॉपर्टीज का प्रूफ थोड़ा बहुत स्मॉल है ना, उसको अच्छे से मतलब देख एक बार मतलब रीड करके जाना है, ठीक है. मतलब जो सारे प्रॉपर्टीज तो बहुत है, फॉरवर्ड डिफरेंस का प्रॉपर्टी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है फॉरवर्ड डिफरेंस का ना. तो फॉरवर्ड डिफरेंस का प्रॉपर्टीज में जो सारे प्रॉपर्टीज का प्रूफ छोटा है, वो एक बार अच्छे से रीड करके जाना है. सपोज एक प्रॉपर्टीज है, सपोज ए एंड बी टू कांस्टेंट. फॉरवर्ड डिफरेंस का प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी be any two constant. Suppose I give you a and b be any two constant, okay, then we can write as a delta a equal to 0. So this is the first property. So इसका प्रूफ आपको मतलब अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है. दिस प्रूफ इज वेरी इजी. सो इसका प्रूफ दे सकते मतलब तो शायद एग्जाम में दे दिया, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत ये जो सारे प्रूफ स्मॉल, जो सारे प्रूफ का साइज थोड़ा स्मॉल है, मतलब छोटा छोटा प्रूफ है, वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है. सपोज प्रॉपर्टी 2, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी तो नॉट सो लार्ज, राइट. ए ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए डेल्टा एफ एक्स, इसका प्रूफ भी छोटा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है. तो सारे प्रॉपर्टीज जो फॉरवर्ड डिफरेंस का जो सारे प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज और सारे रिजल्ट अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है. these all the properties are very important for your upcoming examinations. सपोज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज कर सकता है, ठीक है. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप क्वेश्चन में मिल सकता है. देख लो एक बार. डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये वाले जो क्वेश्चन का टाइप है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू व्हाट? Okay, and another type of question, suppose I give you delta square f of x square fx equal to e to the power x. Find delta square fx. ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है. तो फॉरवर्ड डिफरेंस इतना ही था. इसके बाद क्या है बैकवर्ड डिफरेंस, राइट. So backward difference is another important part of the numerical analysis. So backward difference भी अच्छे से पढ़ के जाना है. Backward difference. फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉरवर्ड डिफरेंस इतना ही था.
बट इसके बाद क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस। ओके, तो बैकवर्ड डिफरेंस क्या है ना, देखो बैकवर्ड डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नेबला वाई आई इक्वल टू yi minus yi minus 1. This is our backward difference form, right? So we can write nabla of fx equal to fx minus f of x minus h. Okay, all right, ठीक है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस को, एंड बैकवर्ड डिफरेंस को मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई आई को हम ऐसे मतलब नेबला स्क्वायर वाई आई को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेबला वाई आई माइनस नेबला वाई आई माइनस 1, सॉरी नेबला वाई आई माइनस। ओके, so this is the representation of backward difference. Okay, so backward difference is very important, and forward. Okay, another important part is the in forward difference और and backward difference में दो important part था, एक forward difference table था, this is important, forward difference table, this is very important, and another part is for backward difference में भी same backward difference table। तो एक बार अच्छे से कैसे टेबल प्रिपेयर करते हैं ये एक बार देख के जाना है, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो दो चीज है इधर, एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड अनदर वन इज अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ओके, तो बैकवर्ड डिफरेंस में ज्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं था, बट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बहुत बार एग्जाम में भी आया, so that this is very important result, delta into nabla equal to delta minus nabla. This is very important result for your examinations. So we know delta, इसको proof देखो, if we know delta fx equal to क्या है, f of x plus h minus fx। ओके ओके, मैंने ये डिफाइन नहीं किया, नेबला हाँ डिफाइन किया, नेबला ऑफ एफ एक्स भी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, राइट। तो ऐसे लिख सकता है डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, नेबला ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ओके, so now therefore delta into nabla fx equal to, we can write delta of fx minus f of x minus h here. Then how can, after that we can write delta fx minus delta of f of x minus h. Delta is distributed by term of the under the term of the bracket, right? Delta we distributed with first one this and second one this, delta is distributed with that two part, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एफ एक्स एंड डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, नेबुला एफ एक्स ना, डेल्टा एफ एक्स माइनस नेबुला एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो डेल्टा माइनस नेबुला ऑफ एफ एक्स, so for this we can conclude delta into nebula equal to delta minus, this is my result. So this result is very important for your third semester examination, so please
अच्छे से ये रिजल्ट रीड करके जाना है, ठीक है। प्लीज रीड केयरफुली द रिजल्ट। डेल्टा इंटू नैमला इक्वल टू डेल्टा माइनस नैमला, ठीक है। एंड इसके बाद फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में अनदर इम्पोर्टेंट part is there, like shift operator. Okay, shift operator is very important part of this chapter. तो शिफ्ट ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं? शिफ्ट ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ई इज द नोटेशन ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, एंड शिफ्ट ऑपरेटर को हम डिफाइन कैसे डिफाइन करें? शिफ्ट ऑपरेटर को हम ऐसे डिफाइन करें, ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। E of fx equal to f of x plus h being the spacing, h being the spacing, okay. So E of fx equal to f of x plus h. So इसको हम shift operator, this is called shift operator, okay. So shift operator is very important, and shift operator का जो सारे properties है ना, this is very important. लाइक ई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो डेल्टा प्लस वन, एंड डेल्टा को ऐसे रिप्रेजेंट करता है ई माइनस वन, ठीक है। दिस आर ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, राइट। एंड ई ऑफ ई स्क्वायर एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ई स्क्वायर एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। हाँ, तो हम दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स प्लस टू एच। इसके बाद हम e cube fx, what is the representation of e cube fx? This is e of f of x plus 2h. This is f of x plus h. This is another representation of shift operator. So now we can write e to the power n of fx. We can write e to the power n of fx. So this is the what? E to the power n of fx. E to the power n of fx is the f of x plus nh, ठीक है। तो this is very important result of the shift operator, and e inverse fx का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? this is f of x minus h. e inverse fx, this is f of x minus h, and then ऐसे करके e to the power माइनस एन एफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? f of x माइनस एन एच। e to the power माइनस एन एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकता है, f of x माइनस एन। ओके, ऑल राइट। तो डेल्टा एफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन हम देखा था। तो यूजिंग डेल्टा एफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा था? f of x plus h minus fx, okay. Following these, we can represent e of fx equal to f of x plus h, right? And this is what? Delta of fx plus f of x. Then we can represent as a delta plus 1 f of x. So e equal to, we can represent as a delta plus 1. This implies delta equal to e minus. This is very important result for your examination purpose. So please be careful, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। So this is all about the shift operator, and shift operator का
बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सपोज इनवर्स इक्वल टू 1 - d and delta square equal to e minus 1 का whole square, right? This is all about the problem of shift operator. Okay? And ये सारे प्रूफ भी, दिस टाइप ऑफ प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रूफ दैट e to the power h sorry e equal to e to the power ht. ओके, तो ये सारे प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक this is enough for the shift operator. Okay, another just small question. This is little bit important. So that delta delta minus nabla equal to delta square. This is another important, little bit important, not. So this is known all about the forward difference and backward difference. And another part is for this chapter. This is very important. What is the that part? This is the divided difference table. Okay. So this part divided difference table is very important. And divide difference table से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है, तो एक बार अच्छे से डिवाइड डिफरेंस टेबल क्या है वो देख के जाना है. ठीक है, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर में, मतलब न्यूमेरिकल का जो सेकेंड चैप्टर कंसीडर किया, उस सेकेंड चैप्टर में अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? डिवाइडेड डिफरेंस. ओके, एक बार अच्छे से डिवाइडेड डिफरेंस का जो टेबल है वो देख के जाना. ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डिवाइडेड डिफरेंस का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी भी है, एक बार देख के जाना है. उसका प्रूफ जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर्टी देख के जाना है, मतलब ये केयरफुली रीड करना. ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस का जो सारे प्रॉपर्टीज है एक बार रीड कर लेना. ठीक है, तो this is all about this chapter. This is theory of this chapter. Okay, and another small proof, this is very important proof, like, so that this proof is also very important. Delta to the power n e to the power x equal to e minus 1 whole to the power n e to the power x. This proof is also important for your examination. I think this is enough for second chapter, finite difference. Okay. जो टेबल का सारे प्रॉब्लम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो टेबल का प्रॉब्लम अच्छे से देख के जाना है. ठीक है, सपोज ऐसे ऐसे दे दिया, सपोज assume find the missing term, find the missing term, find the missing term in the following table. ये टाइप का क्वेश्चन दे देंगे तो दिस इज नॉट सो हार्ड. ओके, एक्स एंड वाई एक टेबल दे दिया. ठीक है, 0 0 1 and this is the missing term, and 2 8 3 15 4 missing term and 5 35. So the question is find the missing term of the following table. So this type of question is very important for your examination view. So this is very important type, and I think this is enough for your finite difference, that is second chapter. Okay.
And third chapter is interpolation, and this is very important chapter for numerical analysis. Okay, third chapter is what? Interpolation. Third chapter is interpolation. So interpolation chapter is very important. So interpolation का कौन part very important, right? So this is our motto. Interpolation chapter is very large chapter. Okay. So for interpolation chapter, first one is first finding the Newton backward interpolation formula. This is the first uh, part of this chapter, right? So first, जो important part of this chapter, this is the Newton backward interpolation formula. Okay, this is the first important part of this chapter. This is what? Newton backward interpolation formula. This is very important for this chapter. Newton backward interpolation formula. Okay. तो इस फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम. ओके, तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एक बार मतलब श्योरली अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है, मतलब अच्छे से रीड करके जाना है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है, up to last form, right? Okay, after that Newton backward इंटरपोलेशन फॉर्मूला के बाद क्या है? लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ओके, नंबर 2 इज अ लैग्रेंज इंटरपोलेशन Lagrange interpolation formula. This is another important part of this numerical. Just a minute. So first type of importance interpolation formula is first type of important interpolation formula is what? This is the Newton backward interpolation formula. And second type of important interpolation formula is the Lagrange interpolation formula. So न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मतलब इसको फॉर्मूला मतलब याद करके जाना है एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व द प्रॉब्लम.
तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में इतना ही था। एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब व्हाट इज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, एंड using this Newton backward interpolation formula solve the problem. Okay, we cannot we are not explaining the what is Newton backward interpolation formula. I think you everybody knows about the what is the Newton backward interpolation formula, and if, I think everybody knows about the Lagrange interpolation formula also. So these two interpolation formula is very important. Okay, so, and using these two formulas, finding the finding the f of something value, right? एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। दिस इज अनदर important part, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन का ये तीन जो पार्ट हमने बोला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, what is the formula and what is the expression and what is the Newton backward interpolation, this is very important, and इसका एक दो problem, and Lagrange interpolation formula, this is another important part, what is the Lagrange interpolation formula, उसका formula क्या है, कोई मतलब प्रूफ का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला एंड व्हाट इज Lagrange interpolation formula, and using the Lagrange interpolation formula some problem, right? आपको एग्जाम में मेंशन करके देंगे, ठीक है, जे फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ऐसे देंगे एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है सर। कंप्यूट एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे, मतलब टाइप क्या होगा शायद, एक बार देख लेता हूँ, चलो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ f of 3.5 and f of 7.5 using Newton interpolation from the following table, ऐसे करके एक टेबल दे देंगे, ठीक है, फॉलोइंग टेबल। मतलब देखो ना क्या था, मतलब मेंशन कर दिया यूजिंग न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्म, ठीक है, एक उसके बाद एक टेबल दे देंगे, मतलब एक्स एंड एफ एक्स, और एक्स का कुछ वैल्यू होगा और एफ एक्स का भी कुछ वैल्यू होगा, 327, 464, 5 125, 6 216, 7 343, 851, ठीक है। So this is all about this type of problem is very important for your examinations. For your examinations view, this is very important. So you ऐसे करके ये भी, ऐसे करके ये भी दे सकते हैं ना, न्यू कंप्यूट द वैल्यू यूजिंग न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन, राइट। तो इंटरपोलेशन में ये तीनों टाइप का इंटरपोलेशन इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों टाइप का इंटरपोलेशन से जो सारे प्रॉब्लम है, मतलब फाइंडिंग सम फंक्शनल वैल्यूज, फाइंडिंग का जो सारे प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरपोलेशन में और कुछ ज्यादा नहीं था, मतलब ये तीनों जो फॉर्म है ना,
Lagrange interpolation formula and Newton divide difference formula um, um, and न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये तीनों जो फॉर्म है ना, इस तीनों फॉर्म का मतलब सारे मतलब फॉर्मूला क्या है, तीनों फॉर्म का एक्सप्रेशन क्या है, एंड व्हाट इज न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन, व्हाट इज लैग्रेंज इंटरपोलेशन एंड व्हाट इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, सॉरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। ये वाले जो 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 डेफिनेशन है ना, वो मतलब डेफिनेशन नहीं है, मतलब उसका जो सारे फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अच्छे से केयरफुल, बी केयरफुल, अच्छे से ये तीनों जो इंटरपोलेशन है ना, एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन इज कंप्लीट, ओके। इसके बाद क्या आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है, मतलब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट, ये जो न्यूमेरिकल का इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट वी नो अबाउट द, फर्स्ट वी सी व्हाट इज इंटीग्रेशन। चलो एक बार देख लेते हैं पूरा, मतलब थोड़ा बेसिक एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ओके। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ओके। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या क्या था, फर्स्ट वी इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू वी डिराइव एंड एनालाइज न्यूमेरिकल मेथड्स टू इवैल्यूएट डेफिनिट इंटीग्रल, ओके। यूजिंग यूजिंग मतलब वी डिराइव एंड एनालाइज न्यूमेरिकल मेथड टू इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड हम ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्म क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रल कौन सा डेफिनिट इंटीग्रल, लाइक I इक्वल टू I इज द इंटीग्रेशन a to b fx dx, दिस इज द फॉर्म, राइट, फॉर एनी फाइनाइट इंटरवल, फॉर एनी फाइनाइट इंटरवल a comma b, okay, right, and by replacing the function fx with a suitable polynomial px, with a suitable polynomial px, such that we can find a integration a to b px dx, right. दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल I को हम डिफाइन किया ना, I इक्वल टू a to b fx dx, and in terms of fx we replace the suitable polynomial px, we replace in terms of fx, we replace fx, the term fx with some suitable polynomial px, okay। fx को हम रिप्लेस करके px लिख दिया with some px is what, px is some suitable polynomial like that, okay। and this I is known as, actually I को हम ऐसे बोल देता है, ठीक है। I को हम ऐसे रिप्रेजेंट करता है, देख लो, I is known as numerical integrations
आई को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और क्वाड्रेचर। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड और क्वाड्रेचर, ठीक है। आई को हम ऐसे बोल देता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और क्वाड्रेचर, ठीक है। एंड देयर इज टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, देयर इज टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ। वन इज द डिग्री ऑफ प्रिसिशन, डिग्री ऑफ प्रिसिशन, okay. And another concept is degree of precision, and another concept is the composite composite rule, ठीक है। तो दिस इज टू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना व्हाट इज डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या है एंड कंपोजिट रूल भी क्या है हो, कंपोजिट। सो ये दो जो कॉन्सेप्ट हम लिखा ना, मतलब डिग्री ऑफ प्रिसिशन एंड कंपोजिट रूल, ये वाले दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो आई थिंक we already see the general quadrature formula क्या है, this is a definite integral I equal to, this is a to b fx dx, right। ये वाले में हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रल है हम दे दिया, ठीक है। तो using the numerical methods we can get the general integration formula, right। Using the numerical method integration we get the general integration formula. So what is the general integration formula? And see, the general integration formula, like the general quadrature formula is what? So matlab I give you integration like definite integral I equal to a to b fx dx, okay, I give you, this is a given, I equal to a to b fx dx is a given, and a to b fx जो इंटरवल है ना a b comma b, this is my interval a comma b, and this interval we can, after we do the partition, after partition we get nth sub interval like a equal to x0, then x1 x2, okay, we get up to xn equal to b, right, n sub interval, and xi equal to, we can write x0 plus I of h. And after using the numerical method, after solving, after analyzing, we get the general integration formula, right, for this definite integral. So what is the general integration formula for this definite integral? See, एक बार देख लो अच्छे से, I equal to suppose x0 to xn fx dx equal to h ny0 plus n square by 2 del y0 plus, ऐसे करके हम, मतलब this is the continuous processing like that, okay। So we cannot represent the whole formula in this suggestion session, ठीक है। मैंने सजेशन सेशन में ज्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ज्यादा फॉर्मूला का कैसे आया ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूँ, मतलब
रिमाइंडर देने के लिए सजेशन सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाले टॉपिक रीड करना है, ये वाले इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं सजेशन सेशन रखा आपके लिए। So this is the formula of general integration formula. Using this general integration formula, suppose n equal to 1 in the I, put n equal to 1, then we get trapezoidal rule, okay. If we get put n equal to 1, then we get x0 to x1 fx dx. And for solving this integration, we use the trapezoidal rule, and this is very important part of this numerical analysis, right? So trapezoidal rule क्या है, मतलब how to solve this integration by trapezoidal rule, this is very important. So एक बार अच्छे से देख के जाना है। एरर इन ट्रापीजॉइडल रूल, एरर को देखने का जरूरत नहीं है। आप अच्छे से मतलब हाउ टू गेट द एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रापीजॉइडल रूल, ये अच्छे से देखना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ये आपको अच्छे से मतलब करके जाना है, ठीक है। So using trapezoidal rule, find the integration, this is very important. And suppose we put n equal to 2, suppose we put n equal to 2, then it's converts to Simpson one-third rule. This is another important part of this chapter, numerical analysis, okay. So first we see what is the trapezoidal rule, and after that we of course see what is the Simpson one-third rule. And this is very important, Simpson one-third rule is very important for your एग्जामिनेशन पर्पस। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल अच्छे से देखकर जाना है, ठीक है। ये दोनों जो रूल्स है ना, एक ट्रापीजॉइडल रूल है और एक सिम्पसन वन थर्ड रूल, ये दोनों का एरर देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एरर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, नहीं है, ठीक है। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल का एरर भी देखने का जरूरत नहीं है, और ट्रापीजॉइडल रूल का भी जो एरर है वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो एक बार देख के जाना, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ये दोनों पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वन क्या क्या पार्ट इम्पोर्टेंट था मैंने बोल दिया सर। वहाँ फर्स्ट वन इज अ ट्रापेजॉइडल रूल एंड सेकंड वन इज अ सिम्पसन वन थर्ड रूल। ये दोनों जो रूल्स है न्यूमेरिकल में, ये दोनों रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शायद मतलब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, देख लो एक बार। मतलब फाइ कैलकुलेट बाय सिम्पसन वन थर्ड rule the value of integral 0 to 1 dx, sorry, 0 to 1 x by 1 plus x dx, okay, corrected up to 3 significant figure. This is very important. A वाले टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And another type of using
ट्रापीजॉइडल रूल शायद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूट x e to the power x dx where the interval -1, 0 by using trapezoidal rule. Trapezoidal rule. By using trapezoidal rule, taking n equal to 6. Okay. This type of problem is बहुत important है। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, important प्रॉब्लम है। Another important problem like find the value of log 2 to the power 1 by 3 from 0 to 1 x square 1 plus x cube dx using Simpson 1/3 rule with h equal to 0.25. ठीक है, this type of problem is very important using trapezoidal rule, using Simpson 1/3 rule. Okay, तो ये दोनों रूल यूज करके जो सारे प्रॉब्लम है, ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से रूल को एक बार पढ़ के जाना है, उसके बाद रूल के बाद क्या पढ़ना है, कैसे उस यूज कर वही ये वाले रूल यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इतना ही था। तो उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बाद थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है, एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस और इसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड उसके बाद गॉस एलिमिनेशन, एडू फैक्टराइजेशन, गॉस सेडल, एंड सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड। ओके, तो हाफ पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, मतलब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तक जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो एक बार अच्छे से जो जो पार्ट हमने इम्पोर्टेंट आपको मतलब सजेस्ट किया, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, लाइक ये वाले जो रूल्स है, सिम्पसन वन था, ट्रापेजॉइडल और इंटरपोलेशन में जो 3 टाइप ऑफ इंटरपोलेशन हमने डिस्कस किया, these all are important part of your third semester। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर को फोकस करके ये जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया आज का क्लास में अप टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तक अच्छे से पढ़ के जाना, इसके अंदर ही न्यूमेरिकल का सारे प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल आपका जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है ना, ये जो स्ट्रीम है, इस आपका जो आपका स्ट्रीम के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डोंट टेक इट वेरी कैजुअली। ठीक है, मतलब इसका कोई सजेशन नहीं होगा, मतलब ये सारे मेथड है एंड मेथड के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब मेथड और ये सारे फॉर्मूला और मेथड है, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला और मेथड वी सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दैट। सो एक बार अच्छे से सारे फॉर्मूला और मेथड मतलब रीड करने के बाद ही आप प्रॉब्लम करने के लिए एलिजिबल होगा। तो इसीलिए अच्छे से सारे जो फॉर्मूला है इंटरपोलेशन का, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, सारे फॉरवर्ड बैकवर्ड
फाइनाइट डिफरेंस का जो पार्ट है, तो एंड उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसका जो सारे प्रॉब्लम फॉर्मूला है अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो जो पार्ट फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, वो फॉर्मूला का प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद ही आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का एग्जाम अच्छा होगा। इसके बिना मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छे से मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द आंसर, राइट। सो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा बहुत थ्योरी भी अच्छे से, थ्योरी का पार्ट अच्छे से नहीं मतलब मालूम होगा तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो सपोज मेरा थ्योरी का पार्ट क्लियर नहीं है, मैं सिम्पसन वन थर्ड का रूल का फॉर्मूला नहीं जानता हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसीलिए अ- जो सारे मतलब पार्ट है ना न्यूमेरिकल का, वो सारे पार्ट का रिवीजन करना, ठीक है। तो हम एक क्लास लेके जो रेस्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड गॉस एलिमिनेशंस एंड मैट्रिक्स इन्वर्शन, एलयू फैक्टराइजेशन मेथड एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, जो सारे पार्ट है और रेस्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का, वो हम डिस्कस कर देंगे एक बार, ठीक है। तो आई थिंक आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आपका एग्जाम अच्छे अच्छा जाए, यही मेरा मतलब प्रार्थना है, ठीक है। तो चलो, आज का क्लास यही फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से न्यूमेरिकल रिवीजन करना, ठीक है।